So good morning, students. Once again, welcoming you in the session of IP, and we are doing our chapter number 7, dictionaries. So in dictionaries, today's agenda is functions and methods. Okay. So in today's class, I'm going to describe you what is function and what is method. First of all, you need to understand that these two terms are not different. These two terms are similar, same. And this is the synonym of method is function. Okay, so function and methods are same, but how you will identify what is function or what is method? So I have given you a clue that if anything has been enclosed in this parenthesis, that means you have to consider it as what? Function or method. Function and method are same. They are being recognized by this parenthesis, this small parenthesis, in which we pass different arguments. Now you will ask me, sir, what is arguments? Arguments are the line of statements. Arguments can be a variable, can be an expression, or can be a line of statement you want to pass to execute the task. Mark my point, whenever we passing argument, we want to execute the task according to this argument. As I am giving the example, print is a function. Okay, now I will pass its argument. I am passing here hello. So this hello is my argument, and this print is my function. Is it clear? I think it's very easy to understand. Okay, so this is my print function, this is my argument, and this is my function name. And what it will produce? It will give me on screen hello. Okay, so this is how you can understand what is function. So far we have used several kind of function or constructor, we can say. So the in dictionary what we had used till डॉट कीज तो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि डिक्शनरी के आगे हम इसको एसोसिएट करने के लिए भी यूज डॉट. फिर हमने यूज किया है वैल्यूज. वी आल्सो हैव यूज्ड zip function, print of course, the very obvious dict. Okay, anything else we have used? We have used input function also. So these are the functions. Okay, now we will understand every function one by one in detail. Reminding you, function is nothing but to execute a task, and it is recognized by parenthesis. Okay, so our very first function is len function. Len, len function. Len function. Once again, as the name suggesting, that it will return us the length of dictionary. Supposing we have a dictionary named LPS, in which A to arts, S to science, and C to commerce. This is my what? Dictionary named LPS. Now, I want to print its length. So I will write here print, in which I am passing len. Len is also a function. और len function के अंदर मैं किसको पास करूंगा? LPS को. This is my len function. Now this will close my print function. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1, 2, 3. So the output will be got my point or not? This is how we can return any dictionary's length. How many of you have understood the length function? Please tell me. Okay, great, good, very good. Now
Next function is dict function. D-I-C-T, dict, and then parenthesis. Parenthesis defining that it is a function or a method. So we already know what this dict function do. It creates a new dictionary. Okay. It creates a new dictionary, or it can manipulate the dictionary also. So how to use a dictionary dict keyword? As I have to give a name, x is equals to, I will pass this dict. Okay. If I'm writing this much of code, then it will create a empty dictionary named x. This will be my output. But what if I need to insert data in this dict function? Then I am creating a dictionary named dict. Here I will pass name. Then I will pass, let's say, Arun. Then I am writing age. No need to mention this name as it is. Just mention the in quotes the data. We don't need to mention the name, age in the quotes because we are using the dict keyword. It will automatically convert this as key into string value because we are using equals to sign. We are not using colon sign. Age to 24, yes, and salary to 50,000. Here it is. So this is how you can also create a dictionary, and output will be name colon to Arun, separator age colon 24 separator salary colon 50,000. So this will be my output using the dict function. How many of you have understood? Please give your consent. Students? Great. Great. Okay. We can also pass predefined list or predefined dictionary into this dict keyword, as I have told you earlier also. Supposingly we are having two lists. Let's say a list number A, a list number B. The list sign denotes with this square brackets. All know that in this, in which I am having 1, 2, 3, and 4. This is my list 1. Okay, this is my list 1, and this will be my, let's say, key. Now it has 10, 20, 30, and 40. This is my second list. What I will do if I need to create a dictionary using this list as key or using this list as my value? How will I do it? I will first create a dictionary named X, or whatever the name you want to give. I will write dict here. I will pass this dictionary in my zip function. Okay, in my zip function, I will pass this A, comma, and a separator B. This is done for zip, and this will be done for dict keyword. So how my output will look alike? It will like 1 to 10, 2 to 20, 3 to 30, and 4 to 40. Now you may ask that why A is being considered to key, because first argument will be considered as key. Second argument will be considered as value. Getting my point, student? So we can also create a dictionary using dict keyword using already made lists also. Okay. Please give your consent if you have understood this method also. Okay. Our next function is get function. Get function means just like we are accessing the values of dictionary using that key. आपको अगर याद हो कि हम डिक्शनरीज की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर रहे थे उसकी की का यूज करते हुए, वैसे ही हम एक सिमिलर साइज का जो टास्क है वो वही है
इसमें अपने क्या यूज करेंगे, गेट फंक्शन का यूज करेंगे। वही वाली बात है कि सबसे पहले अपने को एक डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि जल्दी से बन जाता है। ठीक है, ये मेरी एक डिक्शनरी है। ठीक है, अगर मुझे केवल 20 को एक्सेस करना है तो मुझे और इस फंक्शन का यूज करना है। तो हाउ कैन आई यूज इज दैट ए डॉट, एसोसिएट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डॉट गेट, और यहां पर मुझे क्या पास करना होगा, इसका की। जैसे ही मैंने यहाँ पर की पास किया, ये मेरे को रिटर्न क्या कर देगा, 20। Got my point? डॉट गेट, यहाँ पर मैंने इसकी की मेंशन की मेंशन करने पर मुझे क्या रिटर्न कर देगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब सपोजिंगली आपके पास एक और डिक्शनरी है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। This is my another dictionary in which key is also in string form and values are also in string form. Now I will use this get function. A dot get का मतलब क्या होता है, ताकि हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सके, गेट कर सके। मुझे अगर रोहित देखना है, सो आई विल पास सी हेयर विद दिस सिंगल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स एक्सेस करेंगे तब ये सी इसके पास पहुंचेगा, और फिर सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रोहित, और ये रोहित को प्रिंट कर देगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन यूज गेट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज आइटम फंक्शन। I hope that you have understood this function. So item function is, as once again name suggesting that कि जो भी डिक्शनरी का आइटम होगा, that means considering both things, keys as well as the value also. So if we want to see, if we want to access, if we want to display both the things, keys and values, then we will use items function, because in a dictionary there are two items. First item is key, second item is dictionary. So once again I am taking an example. I think you have been bored to see this example again and again, but this is the simplest example I can take. So here I am calling x dot items. So if I will pass x dot items, it will return me the whole dictionary. It will return me the whole dictionary. This is the items function. Very easy to understand. Next function is keys function, and then after it will be followed by values function. So fourth is keys function. Once again, name is suggesting it will throw only the, it will return only the keys value. A to capital A, B to capital B, and C to capital C. This is my dictionary. If I will call this a dot keys function, mark my point, you have to mention this s also. So it will return me what? A, B, and C. This will be my output. If I will use values function, a dot values, then it will return A, B, and C. ओके, वैल्यूज जो फंक्शन है वो केवल वैल्यूज को रिटर्न करेगा, कीज जो फंक्शन है वो कीज को रिटर्न करेगा। एज सिंपल एज यू कैन सी। और नेक्स्ट फंक्शन इज अपडेट फंक्शन। अपडेट बार बार वही बोल रहा हूं, जैसा कि इसका वंस अगेन नेम ही बता रहा है कि क्या करेगा, अपडेट करेगा। बट
it will work on two dictionaries, dictionary 1 and dictionary 2. दो डिक्शनरीज के ऊपर ये काम करेगा, सिंगल काम नहीं करता। अपडेट फंक्शन क्या करता है कि जैसे कि एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी में अगर आपको डेटा अपडेट करना है, सो यू विल यूज दिस अपडेट फंक्शन। एग्जांपल से समझिए, आपके पास ए नाम का डिक्शनरी है और आपके पास बी नाम की डिक्शनरी, ठीक है। इसके पास नेम है अजय, के पास क्लास है 12 और यहाँ पर है सेक्शन ए। मार्क पर ए के अंदर क्या है, नेम, क्लास और सेक्शन। बी नाम की जो डिक्शनरी है उसमें भी नेम है और इसमें भी लेट्स से अजय। इसमें क्या है, फीस है लेट्स से 40,000 और इसमें भी क्या है, सेक्शन है 2A। ये दो डिक्शनरी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक नया डिक्शनरी चाहिए, इसके लिए मतलब मेनली ये यूज होता है मर्जिंग के लिए। किसके लिए मेन यूज होता है, मर्जिंग के लिए। अब आप अगर कॉमन फील्ड्स देखेंगे तो नेम है इसमें, हाँ है, और इसमें भी है, सेक्शन इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है ना। तो अब अपने चाहते हैं कि जब ये एक ही अजय नाम के स्टूडेंट का ही डेटा है और जब मैंने दो अलग अलग डिक्शनरी बना रखे, तो क्यों ना नेम, क्लास, सेक्शन और फीस एक ही डिक्शनरी में आ जाए। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक डिक्शनरी को चूज करूंगा कि इसमें दूसरे वाले का डेटा आ जाए। तो अब आप लोग बताइए कि आप कौन से डिक्शनरी में चाहते हैं कि डेटा एक ही साथ सेग्रीगेटेड हो जाए। So supposingly we want to insert this B's data to A. So I will write targeted dictionary here. Targeted dictionary is my A. A dot update, and simply I will pass this B. That's it. Nothing is to worried about. And now my output will be, अब A के अंदर डेटा गया है तो A ही रहेगा। अब इसके अंदर नेम भी आ जाएगा, इसके अंदर क्लास है, सेक्शन है और फीस भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब कुछ डिक्शनरी ऐसे मिल जाएगी। मर्जिंग के लिए कौन सा आ रहा है, अपडेट कमांड। ये होगी हमारी टारगेटेड डिक्शनरी। इसको आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ भाई इसके अंदर सारा मर्ज डेटा चाहिए। और ये होगी हमारी अपडेटेड डिक्शनरी, इसको हमें अपडेट करना है। I hope you have understood how you can use the update function. Everyone, please. Good. Now we will see clear and del function. First, I will type it out. Our next function is clear function. And I will like to tell del function also simultaneously. Both these function is used to clear or delete the dictionary. Okay. Mark my point, students. If you will use the clear dictionary function, then it will clear the dictionary. That means it will delete the dictionary's values and key, and then it will convert it into the empty dictionary. But if you will use this del keyword, then it will permanently delete that dictionary and it will not be saved in your server. Mark my point. This is my dictionary named A, and here I will use named X. This is my dictionary. This is my X dictionary. So basic difference. If I will use A dot clear, then it will return me a blank dictionary or empty dictionary. But if I'll use here X dot del keyword or function, then it will show me that X is being deleted. And if in next statement, if I will run this print X, then it will throw me an error
कि ऐसी तो कोई एक्स नाम की तो कोई क्या है डिक्शनरी ही नहीं है। बट जब मैं यहाँ पर प्रिंट ए करूंगा तो ये मेरे को केवल क्या दिखाएगा, एक ब्लैंक डिक्शनरी थ्रो करेगा। क्लियर का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू को ये क्लियर कर देगा यानी कि एम्प्टी कर देगा। बट डेल जो कीवर्ड है, डेल जो फंक्शन है, ये पूरी तरीके से जो है जो भी डिक्शनरी है जिसमें हमने डेल को यूज किया है वो पूरी तरीके से उसको डिलीट कर देगा और उसके बाद हम उस डिक्शनरी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। So this is how we have completed our chapter number 7, which was about the dictionaries. And I hope that you have enjoyed this entire session of dictionaries. Practical implementation, I will tell you on Monday or in the next class. And I hope now dictionaries are clear to you in 5.